यार वो मेरे भाई और इनकी बहनों, नहीं वेलकम टू भाई। द चैनल। आज एक ब्रांड न्यू वीडियो में एंड हमारे साथ आज ऋत्विक कोचर है। ही इज जस्ट हॉलीडेज के लिए अभी ये वापस आया है टू इंडिया। ही इज स्टडिंग इन यूके फॉर हिज बैचलर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम शेफील्ड यूनिवर्सिटी। हम्म, तो वेलकम टू द चैनल ऋत्विक वंस अगेन। तो ठीक है भाई, हंसना नहीं होता है, व्यूअर्स नहीं देख होता, रहे मैं हैं। ब्लैंक हो गया तो फिर मैं क्या नहीं नहीं, मैं भी पूछूंगा ना सवाल, उसके बाद बताना। सो अच्छा। ऋत्विक, कैसा लग रहा है यार यूके में? हाउस द स्टडीज, हाउस द वाइब, कैसा चल रहा लाइक है? स्टडीज आर गुड, लाइक वाइब इज फन, यू कैन गो एंजॉय ऐसा। इट्स नॉट लाइक इंडिया के यहाँ पे कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, बट लाइक इट्स ओवरऑल अ फन वाइब, यू कैन गो एक्सप्लोर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लाइक एंड देयर आर मोर एवेन्यूज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए। लाइक इट्स नॉट लाइक इंडिया में है नहीं, पर इंडिया में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कुछ पंगा फंस जाता है, कभी कुछ। आई डोंट थिंक सो, इट्स मोर स्मूथ देयर। और मेरे को बताओ, हाउ इज द एजुकेशन पार्ट? पहले एजुकेशन शुरू करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन, पार्ट, द इट्स प्रोफेसर्स, द स्टडीज, हाउ इज इट? like one thing it takes getting used to is the online system, because yeah, India it's mostly books. Like you हाँ, don't have to take any books there. Like not sometimes if you are doing science, then you have to go and take notebooks. But like if you are doing something related to social science or architecture, you just have to take a notebook and your iPad or your laptop. तो बुक्स का तो इतना वो नहीं था। ऑनलाइन इट टेक्स टाइम टू गेट यूज टू, बिकॉज स्टार्ट में मैं काफ़ी कंफ्यूज था, बट लाइक अदरवाइज इट्स गुड। लाइक सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है, यू कैन जस्ट एक्सेस एवरीथिंग इन वन प्लेस। एंड अगर तुम्हें लाइक लाइब्रेरीज जाना होता है, दे आर लाइक ओपन, लाइक एट ऑल टाइम्स पूरे ट्वेंटी दिन फोर पे। सेवन ओपन रहती हैं। हाँ, like there is information commons. It's like open. You can go there at 1 o'clock. It's open till morning. It's like open 24/7. वहाँ जाके अच्छा। पढ़ सकते हो, and it's like it has a huge library, like science related stuff, social science related stuff, architecture का, space engineering, वहाँ इतनी सारी किताबें वहाँ पे। So yeah. एंड हाउ आर द प्रोफेसर्स? They're supportive. Like whenever you go there, you have some kind of doubt or you want to make something clear, they're always ready to help. कुछ चीज़ें like some things are new, तो वो कभी कभार जो चीज़ें वो भी बोलते हैं इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, बट लाइक सपोर्टिव सिस्टम तो है वहाँ पे। लाइक इफ़ यू आर इवन स्ट्रगलिंग विद समथिंग, लाइक हमारी स्लीप शेड्यूल ख़राब है, इफ़ यू आर इल, सो यू कैन जस्ट गिव देम अ मेल, इवन दे आर सपोर्टिव अबाउट इट। थोड़ा क्लासेस का वहाँ स्ट्रिक्ट है कि टाइम से जाना होता है, अटेंडेंस भी उनका भी है। अटेंडेंस एंड ऑल दिस हाँ हाँ। काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली स्ट्रिक्ट देयर, बट लाइक अदर देन दैट इट्स जस्ट स्मूथ गोइंग, एंड लाइक टाइम टेबल इट्स नॉट दैट एग्जॉस्टिंग, कभी कभार हो जाता है, बट So how many days in a week do you have classes? like right now I'm doing foundation here, so I have to do like five days in a week, 5 days in a week, from and Monday the to Friday. schedule is from morning to evening. Yeah, it varies. Sometimes it's from early morning, like from 9, and it ends like at 3, and sometimes it starts from 11 and then it goes all till 6. Okay, so you have time for your self studies, Hmm. Sarah. And are you doing a part-time job abhi filhal mein? Not as of now. I was looking for that, and I'm actually making a CV for my part-time jobs. And plus, it also helps कि like मेरे और भी friends हैं उनसे opinion लेने के लिए, so that helps. So you can actually streamline what kind of job you want, because sometimes like I'm more of a creative guy, so I'm actually finding something in some creative field. But like but honestly वहाँ पे like job opportunities, like छोटी मोटी jobs where you can earn like 11 pounds a hour, तो वो काफ़ी अवेलेबल है और वो मिल जाती हैं। मिल जाती हैं, ऐसा मतलब कोई शॉर्टेज नहीं है It's अभी। not because one of my friends were working for like a week or for a week or two, so वो उसे like she was doing part time in a bar or something, तो उसका भी comfortable था उसमें। I don't know if she's pursuing it or not, like the job, but like हाँ, it's accessible. एंड लाइक अभी यू आर इन योर बैचलर्स एंड यू से यार सुबह 9 बजे से कभी 3 o'clock तक रहता है, कभी 11 से 5 रहता है। सो इस बीच में टाइम मिल जाता है क्या पार्ट टाइम जॉब करने का वीकडेज में, या यू Like डू इन वीकेंड्स, या कैसा शेड्यूल रहता like है? the thing is in UK you have like 10 to 20 hours in a week where you can do the 20 job. आवर्स, हाँ। So you can go on weekends if you're not really doing anything. Weekends पे you can go for the job, and like weekdays पे sometimes schedule थोड़ा on and off रहता है, जो मेरे साथ के लोग करते हैं part time jobs. Like sometimes they're not able to pursue their personal extracurricular activities, like जैसे gym वगैरह हो गया, sports हो गई, music and all that.
वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है पार्ट टाइम जॉब के साथ, बट लाइक दे डू गेट टाइम फॉर द पार्ट टाइम जॉब विद द स्टडीज एंड एवरीथिंग। अच्छा, और कहाँ कहाँ घूम लिया अभी तुम यूके में? यूके में आई हैव बीन टू, एंड अच्छा उससे पहले बताओ कि हाउ मच टाइम हैव मतलब इज हाउ मच टाइम हैव यू बीन इन यूके अभी? यू वेंट इन आई वेंट इन सितंबर, September 20 September 18th, September 24, it's been approximately 4 months. 4 months, September, yes. October, November, December, 4 Yeah, months 4 हो गए months. approximately. And अभी तक कहाँ का explore किया? Like one trip, the college took us, like the to the foundation students, they took us to York, like for a day or two, for a day. It was like picnic type, ठीक so है. it was fun. Like they were like, you can just do whatever till this time. So we explored the city, like went ice तो skating and वो everything. एक this is also kind of a activity where you bond with the other students as well. Yes. Right. अच्छा ये तो college के side ये से तो एक college के trip. side से And apart from your solo trip or with your friends? apart from that, I have went to Belfast, I have went to Coventry, and like कभी कभार connecting, जैसे Belfast के लिए connecting flight थी, so I actually had to go to Manchester first, get a train, go to Manchester, and then take a flight from there, because I'm in Sheffield. There is no airport there that you can directly go and take the flight Correct. from. But And Sheffield से Manchester पास में ही है ज़्यादा दूर नहीं yeah, है. it's not far. It's like a 1-2 hour train. ट्रेन से है. And And I've also heard कि ऐसा भी है कुछ कि when you are going to Belfast there's an underwater metro as well. okay, I have not heard about that. मुझे पता नहीं है उसका. I have also heard about it. I have not researched about it. I Like, was just asking you if you know about it. No, because the trip actually was an instant trip, because I was like, I'm just gonna stay here for like 5 days in Sheffield. But then my friend called, and even his birthday was coming up, so I was like, that trip was just planned instantly, like in like 1-2 hours. Okay. So I was like, I got the cheapest flight I got, and then went to Manchester and then Belfast. ठीक है. अच्छा इसमें एक दो पॉइंट्स और जो यूजुअली स्टूडेंट्स के डाउट भी रहते हैं. आई एम श्योर जब तुम भी स्टूडेंट हो तुम्हारा भी डाउट रहा होगा कि व्हाट इज दी लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द वहाँ का लिविंग कॉस्ट फॉर अ मंथ इफ यू से ऑन एन एवरेज लाइक यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल. Yeah, I'm in accommodation, yeah. या तो हॉस्टल अकोमोडेशन में हो आप एंड दैट इंक्लूडिंग द मील्स एंड ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एंड बुक्स एंड हाउ मच इज द एवरेज cost? I'm not saying too high or too low, but for an average student, how much would be the Average cost? cost, if you're not going to gym, you're not having a diet, and like तुम्हारे extra curriculars कम है, you can manage there in like £100 and £100, like 10,000 and for Indian rupees, like £100 there. And कभी कभार थोड़ा सा मतलब ये exceed हो जो जाता है. 100 pounds है, so this is for the fooding part that you're saying. For the food, and like because when you go at this, like when you go there initially at start, बहुत सारी चीजें होती है you don't know, because I really packed a lot of, I packed less regarding my like the stuff that I have to have in my room. So I then like धीरे धीरे चीजें पता चलती है that oh I need this. So like at the start of the month, I think the expenses are a little high, like the starting of When the you are month. going for the first, like Yes. when you are landing, उस समय तो चलो ज़्यादा Yeah, रहेगा. the expenses are going to be a little more, but as But you as get you used to used to it, तो as you get what you're comfortable to eat, like what you're gonna get for the week, and then it gets stable. so like your a big hostel sum. accommodation is somewhere around, what is the cost Like monthly for approx? the foundation, it was a little expensive for me. But like when I was looking for the accommodation for next year, it's relative. It's like it's like £3,000 cheaper. So what is the figure that we have for the next year? For the next year, this year it was like around £7,000 For the year, for only a year, for for the a year, for the year. for the There- accommodation. Yes, for the accommodation. So it's but roughly equal to, let's say, £550 approx, 550, £600 a month. If we talk about monthly. yes, ठीक like है. weekly £165 या 150 weekly, क्योंकि Week- वहाँ पे वैसा ही होता है. 150 weekly हो गया, 4 weeks if we take, so £600. £600, Roughly £600 for that. You said for a normal person who is not into gym, dieting and proper diet and everything, £100, but अगर diet भी लेता है £150, I guess. 150 to 200? 180, 1 तक exceed हो जाता है. ठीक है, so this comes out to 750 And से if 780 for you example. are a partyaholic, like उनके थोड़े खर्चे ज़्यादा होते हैं, हाँ. because like you go to clubs and every other places, तो उसमें थोड़े expenses बढ़ जाते हैं, but like I'm not into that very much. हाँ. So
उसका खर्चा इतना So it if doesn't really affect me. if I would say a roughly figure would be 700 to 800 pound for a living expenditure a month, so would that be fair enough? Like In Sheffield, kind of in city. Sheffield, I think Sheffield, a lot of people that I have interacted with, like जो बाहर के ही हाँ हैं, हाँ हाँ they have actually called Sheffield a cheap city. For us, it's not that cheap, but like for them, it's actually a cheaper city to live in because there was a comparison. A guy I met, he was comparing with London, Okay. and like the thing that costs like two pound here, it's gonna cost there 4-5 pounds. So see, London is London is expensive. expensive. London is like Mumbai. इंडिया में देखो इंडिया मुंबई में, जैसा है या कोई मेट्रो सिटी के जैसा है कि थिंग्स आर एक्सपेंसिव, रेंटल्स आर एक्सपेंसिव इफ यू आर लिविंग इन इनर सर्कल ऑफ दैट ये लंदन में. सो इट्स लाइक द खान मार्केट. चाय पीने जाओगे यहाँ अगर नॉर्मल पियोगे तो आपको 15-20 रुपए की 15-20 रुपए की मिलेगी. वहाँ जाके पियोगे तो 50-60 रुपए की मिलेगी. 100 रुपए की तो होगी मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही है. ओके. लाइक जैसे इन अगर लाइक जो भी फर्स्ट ईयर वगैरह करने जा रहे हैं, रिकमेंड सर्च फॉर अकोमोडेशंस देयर बिकॉज काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली पेइंग रियली लेस एंड गेट एक्चुअली लिविंग इन बेटर अकोमोडेशन. Okay. मैंने नोटिस करा वहाँ पे बिकॉज दे आर जस्ट पेइंग लाइक 4,000-5,000 a year. And like they're getting a proper gym, they're getting a big room space. So how to find these kind of like accommodations? you can just search it up accommodations in the specific city because मैंने भी वैसी search करी थी. And like, do you have any websites to search from, or there are some Like, groups that you search from? I just went on Google Scouting के like कौन से what are the accommodations, and there are various links. I mean I don't remember the names all of them. Okay, we will publish that in the मतलब एक comment section. Yes. आप बता देना, we'll But share that. otherwise, other than that, like it's not that hard to find कि like accommodation, but it's really up to the budget and the space you need. जहाँ तक ना मेरे को भी लगता रहता है क्या होता है, सी व्हेन वी आर हियर इन इंडिया एंड वी आर लेट्स से फाइंडिंग एन अकोमोडेशन इन यूके, सो यहाँ से यूके की चीज़ लेंगे तो महंगी पड़ेगी. Yeah, of course. द सेम थिंग लाइक अगर हम यहाँ पर वो डोसा खाएंगे तो वो कंपैरेटिवली महंगा मिलेगा रादर साउथ में जाके लेंगे तो, क्योंकि वो वहाँ की डिश है तो वहाँ पर उसी हिसाब से रेटिंग है. और वही चीज़ अगर जैसे हम नॉर्थ वाले में आलू पराठा या खाने वो हम साउथ में जाके खाएंगे तो महंगा मिलता है. लाइक आई हैव लिव्ड इन बैंगलोर फॉर सम टाइम एंड आई नो कि वहाँ पर ये चीज़ें एक्सपेंसिव थी, वो चीज़ें सस्ती. एंड आई थिंक द सेम थिंग गोज कि अगर आप इंडिया में रह के कोई अकोमोडेशन यूके का ढूंढ रहे हो तो इंडिया से लोगे तो थोड़ा हायर रहेगा, बट अगर वहीं जाके यू टेक एन अकोमोडेशन इट इज. But like if you compare it to cities like in India like Mumbai or something, like जो like काफी लोग NMIMS में like I have few friends, उनसे जब मैंने पूछा था the price is almost competitive ज़्यादा, like उन लोगों के लिए भी like it's like when I heard कि even they are paying this much amount and I was like it's really comparable according for the accommodation and stuff. Like because sometimes UK में काफी जो like I'm actually the member of Indian Society, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो लाइक व्हाट दे आर लिविंग इन एन अकोमोडेशन एंड दे आर एक्चुअली पेइंग वे लेस. लाइक मेरी जो फ्रेंड है कोवेंट्री में, शी इज आल्सो पेइंग लेस एंड लाइक दे हैव बिग रूम्स, बिग प्रॉपर स्पेसेस. Okay. तो लाइक अभी तो द थिंग आई थिंक व्हाई माय यूनिवर्सिटी इज नॉट एक्चुअली अलाउइंग मी टू स्टे इन अनदर accommodation, it's because it's the foundation year. Correct. Because I am 19 but like a lot of other people are not Even above 18. 18. Yes. No, not even 18. So because of that, otherwise even in accommodation that I am living in, it's not that bad. It's actually pretty comfortable. So Okay, great, such informative knowledge you provided us. अच्छा, एक चीज़ और बताओ, like how is the environment? Like मैं इसका रीज़न पूछता हूँ, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ how is the environment का, कि these days there are a lot of reels on social media or stories or these kind of posts कि the environment is not good. जैसे कनाडा में आजकल सिचुएशन चल रहा है, प्रोटेस्ट, ये रॉबरीज एंड व्हाट ऑल अदर एक्टिविटीज. तो हाउ इज द एनवायरनमेंट इन यूके, उस सेंस में पूछना चाह रहा था मैं. UK, I don't लाइक द पीपल की एथनिसिटी, मतलब ज़्यादा इंडियंस है क्या, ज़्यादा चाइनीज़ हैं क्या, ब्रिटिशर्स ज़्यादा है It क्या? really depends on the place because I'm in Sheffield. There are a lot of that because Sheffield, I think it's one of the. I feel like it's really diverse because there are people from a lot of different parts of the world. Like India से काफी लोग हैं, from India, Saudi,
from China, Japan, and like even from America. There are a lot of different people from around different parts of the world in Sheffield. But like when you go to some town, like I just went to Belfast for like 2 or 3 days. I mostly noticed Irish people there. Like with the mutuals, they had like Indian friends, but like mostly they had Irish people. It really depends on the place कि तुम कहाँ जा रहे हो, how people. So Sheffield is more of a very मतलब a I feel diversified like I feel place. like I might even feel that way because right now it's an international foundation here. तो बहुत सारे international वो है. When I actually go to like my first year, तब शायद पता चले कि okay there are more like ज्यादा British हैं यहाँ पे. Yeah, so it's only been around 4 or 5 months that you have Yes. been there. So, but again, that is also a valuable experience because you have been there. So on ground reality क्या चल रही है क्या चल रही है? Yes. वो पता होना चाहिए. And as you mentioned कि jobs का भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. There are ample of jobs that one can find as a for a part time. The diversification of ethnicity is also there. Yes. काफ़ी सारी चीज़ें and helpful university. The professors are helpful. University facilities are good. So as such कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. There are people who post a lot of things कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है. It's actually not that much true. like दिक्कतें तो like wherever you go there you are always gonna find problems. It's not like if you stay in India there you won't find any problems. Problems so like they are every places. If you are more into driving like I am, I actually miss driving in cars a lot because you can drive here freely and the license procedure is not that hard in India. It's really complicated in UK. You have to give a written exam and then all those kinds of stuff. Like हर place के different hiccups होते ही हैं I guess. And अच्छा तो इसी पॉइंट पे एक और सवाल पूछ लेते हैं फिर. What hiccups did you face? क्या क्या challenges आई, क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें मतलब कुछ भी स्यापा हो गया, क्या हुआ ऐसा? like I won't go into the full extent but I'm just gonna say don't sell anything on eBay. If you are new don't sell anything on eBay. And like UK में तो please don't. And other than that like एक छोटी मोटी चीज़ हो जाती है कि कभी like sometimes you feel like you won't need a lot of stuff जाते वक्त but then you realize you actually do need that stuff. Like जैसे for example like for example yeah simple kitchen utensils. I just took 2 spoons and 2 fork. That's what I took for eating. Because I was like it's just one person because like घर में सिर्फ 3 लोग हैं हमारे तो like so बाकी like I mean everybody eats. I was like I'm just one guy एक ही चीज. It's gonna so you didn't took any pans or मतलब ये cutlery में only 2 like spoons and yeah 2 I forks? like जरा से like just one pan and everything and I mean काम of course चल जाता है उसमें but कभी कभार it's such a mess कि यार ले ही आते हैं. Then उसके बाद अरे तो you must have bought it from the market and then have said to your parents कि यार थोड़ा because फंड थोड़ा और दो because थोड़ा the खर्चा no ज़्यादा yeah करना है. because the things there are a little expensive because like usually यहाँ पे जो चीज़ 500 रुपए की मिलती है it will cost you like a full 1,000 rupees there. So that and like और तो वैसे like अगर तुम like you are just going there to study तुम बहुत like you are not roaming around and you are not like doing all the different kind of stuff that is gonna get you in trouble. It's really smooth. Like agar like if you genuinely want to go and you want to do something that's actually gonna get you in trouble, then it's a problem. But like when you like small choti moti cheeze like you do get used to. But like because when you are transitioning to a new country, it's a little different. बहुत सारी चीजें like some things are really accessible, some things are not. So it just varies. गाड़ियों वाड़ियों का because it's really expensive for us. Plus we are students. I'm not even earning right now. So I'm not looking into the driving stuff. I know you have that passion for riding bikes specifically. I mean, like I just like driving, not as like the car should be like this or that. In general, In general, you like yeah, to travel basically. You like to travel, you like to ride. like around the city, yeah, you can. देहरादून वाले हो यार तो राइडिंग का तो शौक होना ही है. Dehradun, it's like I thought like Dehradun is a small town, but like when you go to UK and everything, you can just go anywhere walking. Here I cannot come like to your place. I cannot just walk here.
it's gonna take me an hour to walk here. Why More not? than an It's hour, more than an hour. more than an hour. Uh-huh. Here and there, it's just like 20 minutes, 15 minutes. Smaller places, Smaller nearby places. हाँ. What I notice in UK is है ना छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं Hmm. at some point, Yes. मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस अराउंड 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं. तो एक टाउन इतना छोटा दैट यू कैन वॉक अराउंड द फुल टाउन एंड एक्सप्लोर थिंग्स. Right. So, any other things that you need to share? I still have like 3 more years, so So, you will be back again. in June. एंड मैं फिर से तुम ऑफिस आओगे, मैं फिर से तुम्हारे साथ एक सेशन ये करूँगा. एंड ऑन देखो इट्स इन डिमांड बिकॉज पीपल वुड वांट टू हियर द एक्चुअल फीडबैक कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. आर दे गोइंग टू अ प्लेस विच इज सेफ, which is actually a university which is actually helping you in the grooming your educational life and professional life, सारी चीज़ें वो रहता है. तो but thank you Ritvika so much for sharing this. Yeah. Thank you so much. And thank you guys for watching, and if you want more videos like this from Ritvik, so please From comment me? From me? from you. From me? यार और बच्चे भी पकड़ लो. और भी आएंगे, बट इफ यू वांट मोर वीडियोस तो प्लीज एक कमेंट आप करना. वील ट्राई टू मेक मोर वीडियोस फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर हियर ऑन हॉलीडेज एंड दे कैन शेयर ऑनेस्ट फीडबैक विद अस. थैंक यू. यार वो मेरे